Hello, everyone, and welcome to the Unparliamentary Podcast Language Thingy, episode number 1. Yay! It only took us 4 months and a pandemic to come back. So, today we'll be लेकिन talking अभी तक about एपिडेमिक नहीं हुआ Pandemic pandemic हो गई नहीं बट एपिडेमिक नहीं हुआ क्या अभी तक नहीं एपिडेमिक से ग्रेजुएट होके पैंडेमिक बन गया. ओ अच्छा एपिडेमिक ब्रो वो ब्रो पता नहीं डब्ल्यूएचओ अरे नहीं डब्ल्यूएचओ ने बोला कि स्वाइन फ्लू से ज्यादा सीरियस है आई गेस So Swine flu epidemic is in a small area, as far as I know. It's in a country. pandemic is when it's pan epidemic, हाँ, pan pan as in के across अंदर the रहता है world. जैसे हाँ I think epidemic होता है फिर pandemic फिर direct like mass extinction. Damn, मुझे नहाना था. So I think my tub's leaking. I'll check. अरे अरे कोई तो- नहीं जा Oh shit! I just dropped my switch. Holy shit! Okay, no. Okay, I mean, we might as well get to the point. I mean, how are you spending your lockdown/quarantine? Everything's ending today, supposedly. I mean, it's obviously going to get extended. So, but what That's have you what she been doing said. to spend your? It's going to get extended. नहीं Yeah. Okay. Also, yeah, I'm pretty sure my mother will listen to this podcast. So, hi, mom. oh shit क्या क्यों Oh, shit. एक second that changes everything. Yeah. So, what have you done during the lockdown? How are you spending it? अबे जस्ट अ मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये कि सोच के बोलेगा. I mean, bruh, हाँ ठीक है Gucci. अच्छा cool. Yeah, so where were we? So what have you done during the lockdown so far? Editing बहुत ज़्यादा. Yes, nice. सूप Soup? You've done soup? Soup. Second आवाज कट गई What? soup पे. Is he still here? मैं सुप्रभात कहना चाहता हाँ. हूँ. मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ हर सुबह. मैं What सू just happened? करने Okay. जा रहा हूँ. मैं तुम्हें पता है ना मुझे एक्चुअली बैठ के ये पॉडकास्ट प्रॉपरली एडिट करना पड़ेगा कि कहाँ पे कॉन्वर्सेशन कट गया. हाँ Yeah, यस. you're audible. हाँ ठीक है क्वारंटीन में क्या कर रहे हैं? अपार्ट फ्रॉम द एली गोल्डिंग वाली चीज या मैं एक्चुअली बहुत बहुत सुपर बिजी हूँ पता नहीं क्यों मैंने बहुत सारी चीजें पिकअप कर ली मेरे को लगा कि फ्री नहीं बैठना और मैं लिटरली 1 घंटे के लिए भी फ्री नहीं हूँ Whoa, we've been troubleshooting this for the past 2 hours. हाँ तो वो अलग बात है वो मेरा ब्रेक था Cool. So what are you doing? What exactly? मैंने क्या था एक यूडासिटी का नैनो डिग्री कोर्स था 4 मंथ्स का और उसमें ऑफर था फर्स्ट मंथ इज फ्री तो वो मेरे को बेसिकली 4 मंथ्स का 1 मंथ में कंप्रेस करके करना है तो पर डे मेरे को 4 दिन का काम करना पड़ा प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड और वो बिल्कुल भी एक टाइमलाइन से एक दिन भी आगे नहीं जा सकता क्योंकि फिर उसके बाद से पर मंथ इट्स 30,000 है तो वो सारा मेरे को 1 महीने में करना मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा प्लस काटा के बंद काटने से ऑब्सेशन की वीडियो काट दूंगा ऑडियो काट दूंगा. अच्छा ऑडियो की बात हो रही थी क्या अच्छा so some other topic I guess. Yeah. Movies. Is anybody watching any movies?
watched a किसी ने bunch टाइगर of किंग movies. देखा क्या? Yeah. So, okay, so I finally succumbed. I think I've told you about this. I don't think I've spoken to Akshit about this. I finally got myself a Netflix subscription. After I don't know how many years, I finally bought myself a Netflix subscription. Why? To watch chiller Telugu movies with my mother. ओके, जब मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था shitty movies, कि मल्लू movies. You said shitty Mallu movies. One, they're not Malayalam movies. चिल्लर, अगर मैं Malayali edit करके चिल्लर Two, करता हूँ, is that they're fine? Telugu movies. See, shitty and chiller are different. Chiller is हाँ ठीक है, तो मैं चिल्लर लिख Shitty देता हूँ. is bad. Chiller is self-aware. Okay. हाँ, तो I was just complimenting your choice. Yeah, sure. Says the guy who watched Telugu movies with subtitles with me in my room and laughed for crazy for no reason. You might as You well. have no idea. You have no idea वो और क्या देख चुका है. Did he see that as क्या? well? अरे समय का पता नहीं लगता जब मिल बैठे तीन यार, आदित्य, आयान और अक्षत. समय का पता नहीं लगता. हाँ, movies. So, आज इतना awkward था मेरे लिए because मैं अपने रूम में था and I don't have anything to do anyway, तो मैं खाली घर में घूमता रहता हूँ. But my parents started watching Family Man. और मैं सोचा क्या यार, टाइटल ही Family Man है. Yeah. And वो लिविंग रूम में देख रहे हैं. मेन टीवी wait, पे. seriously? मैंने एंटिसिपेट नहीं किया. हाँ, तो वो लोग पहले इंग्लिश में देख रहे थे बट अजीब लग रहा है बिकॉज वो लोग हिंदी में बात कर रहे हैं बट डब में पता चल रहा है कि वो ओरिजिनल ऑडियो नहीं है. सो दे आस्क्ड मी कि इसका ऑडियो ठीक कर दो. लाइक अच्छा ठीक है. तो दिस इज अ स्पेसिफिक सीन जब मनोज बाजपेयी अपने बच्चों के साथ कार में होता है. लाइक हाँ, फैमिली मैन कितनी फैमिली फ्रेंडली है. उसका बच्चा चिल्लाता है. उसमें क्या है? ठीक है. मैंने ऑडियो चेंज कर दिया. मैंने प्ले दबाया. मैंने सोचा ठीक है 2 सेकंड खड़े होकर देख लेता हूँ. अगले 2 सेकंड में बंदा बता लाइक होली शिट. मैं चुपचाप भागा अपने रूम में और मैं जब भी दरवाज़ा खोल के बाहर देखता हूँ हमेशा अलग अलग नए तरीके की गाली मिलती. ऐसे एक बार दरवाज़ा खोला, कोई चिल्ला रहा, मैं दरवाज़ा बंद कर दिया. फिर से खोला, कोई चिल्ला रहा, तेरी, मैं दरवाज़ा बंद कर दिया. तो अपने रूम से दिखना नहीं हूँ. अपने रूम से पिछले 6 घंटे से अपने रूम से निकला नहीं हूँ. मैं पता नहीं क्यों देख रहे हैं बट पिछले 6 घंटे से I think I watched the first 2 or 3 episodes with 2 episodes I think with my parents. I don't know if we watched any more after that or if they have. So I remember. No, we watched it in Hindi. And I remember this happening, and there were swear words, obviously, and my father was just sitting, watching with no expression. I started laughing out loud, burst out laughing. And then my mother's looking at me that, why are you laughing? And then she also sort of giggled. But yeah, so it wasn't that bad. It was quite funny. Whenever these kind of things happen, when someone starts swearing on TV, I just burst out laughing. Because the situation is quite ideal when you're next to your parents and someone is swearing on the television. स्वेरिंग से याद है मैंने जो इतनी जोर से चिल्लाया है अभी. वही तो क्लैप्सिंग नहीं कर रहा था बट यू वर हैप्पी टू स्वेयर. पता नहीं थी जोर से कि चिल्ला. So whose room is right next to the wall beside you? Nobody, I guess. थोड़ा रूम आइसोलेटेड है but it's still pretty audible, I guess. Agar. Fair enough. Dude, that's one really good thing. I mean, I might as well say it. I haven't been saying it earlier, but I know I'm privileged. I get it. I am very well aware, but I've struck the jackpot for finding the place to be quote-unquote self-isolated in. हाँ वही exactly. That's why it's not good for you because तुझे अगर हमारे साथ record करना है, you'll have to record at like 3:30 a.m. Huh, wait, and mainly it's regular because we are having our summer vacations right now and I barely left my house anyway. It's practically just summer vacation where I need to ration my snacks rather than eat like a pig. हाँ, pig से याद आया.
Seriously, man, come on with that. ये मेरा दिमाग नहीं चला. There's no filter anymore. मैंने जोर से गाली No दी अपने घर shit. पे. पहली बार अपनी इतनी जोर से गाली दी मैंने. हाँ. This reminds me of something. So I was talking to my mother and I was trying to remember a name, a Telugu name. I was trying to remember a Telugu name, and whatever the name was, I sort of thought of a word that sounds similar to the name, very unintentional, but it was a swear word in Telugu. And I just casually said it in front of my mother, asking that, Amma, is this the name? And she sort of looked at me, did a double take, but she started giggling. I said, You Kya can hua?" say the word. Like, she listened to it. I don't want to swear. I don't swear in general. I think So- वो threshold अभी क्रॉस हो चुका है तो हाँ, edit कर लेंगे. वही. You ये guys ऐसे नहीं must have जा heard this in college. Yeah. You guys must have heard that in college. That's the नहीं, swear नहीं. word. कॉलेज में इतनी हर जगह मतलब यार क्या? सुनने को मिलता रहता है तेलुगु में. इसका मतलब क्या है? So I just said it in front of my mother and she started laughing and I said, did I swear? And she said yes. So yeah, that was awkward, but that happened. So I just swore in front of my mother without realizing it. Nice. हाँ, विदाउट रियलाइजिंग इट तो चलता है. ये जो मैंने इतनी जोर से अभी चिल्लाया है. अरे हाँ, एक और हुआ था. So okay, I might as well start from there. So there's this, I won't say the last name, but there's this girl called Lohri in my school. हाँ, She was my senior. punchline पता चल गया सबको. wait. There was this girl. There's no punchline. There was How's this my girl sister called- doing? there was this girl called Lohri, and me being a South Indian, my Hindi not being the most strong or whatever. So I was with another friend. She was the common friend, and my friend kept calling her Lohri. I was like, dude, what are you doing? Stop swearing at her to her face. And then they both looked at me saying, no, my name. She said, my name is Lohri. I said, okay, sure, Lohri. Now, so I still have a confusion with the fact that, see, I'm being very careful when I'm saying Lohri because it's Lohri. So I still have a confusion with the pronunciation sometimes. So instead of saying Lohri, I'll say Lohri with a hard D. With a hard D. Yes. I'll say Lohri with a hard D. Ooh. And so this was well before the lockdown or something, just some 4-5 months ago. And then my mother and I were talking, and then we thought we'll have some plans for Lohri. And we were just in the corridor, and I said Lohri with a hard D. हाँ वो तो ठीक है बट बोला कैसे? And exactly. I said it with a hard D. And exactly हाँ, वो at that ठीक है, instant. And exactly at that instant, our housekeeper was walking down the stairs. So I was just swearing in Hindi in front of my mother, and she couldn't say anything because she got angry and just walked away. And my housekeeper just looked at me and acted as though nothing happened. So yeah, that was the thing. Oh wait, do you remember you told this story? I don't think I was there, but EC lab में you had your trademark T-shirt on. It says Oh yes, you can say what it says. I don't mind. it's a prestigious university. It's Lund's University. Oh, that. Of Okay, I was course. thinking of something else. Haha. Okay. Yeah, hi Wait, what Saket. were you thinking of? Yeah, I was thinking of something Saket? else. What? I don't know. We were supposed to wear certain shirts for a presentation together, which you all bailed on, and I was the अच्छा, वो only one who management bought वाला. that T-shirt.
Yeah, okay, so full Wish disclosure. some- These guys are absolute. We had a presentation in a course. We were all together. We were in the Kya? same team. Yeah, you guys are all massive. We were supposed to give a presentation हाँ, in वो a ठीक है, management course. And we all decided that together we will all wear Narendra Modi fan club shirts. Know what? Namo merch. Yeah, Namo t-shirts. So that it'll be funny or something. And turns हाँ, out 4 I was t-shirts the का only- प्राइस कितना था? 2002 rupees. Nay, I think it was 300 rupees per shirt. Oh, I thought 2002 rupees था 4 shirts का. अरे वो टी शर्ट्स आ कहाँ से रही थी? प्लेन से आ रही थी, ट्रेन से आ रही थी. You're the lucky one, aren't you? Yeah, of course. That reminds me, have you guys like been catching up with the news lately? Yeah, dude. That's I have a news channel 24/7. running in my house at least 24/7. I 4 swear. hours a day. तो सुदर्शन न्यूज़ की बात हो रही है. सुदर्शन न्यूज़ की बात. Oh, okay. No. I'm not watching Sudarshan News. कितना सुदर्शन I न्यूज़ need to, बिल्कुल man. I haven't seen अनबायस्ड Sudarshan है. News. I need to start watching Sudarshan News. Dude, we उस should बंदे get का their नाम main क्या है? anchor. We should pester him हाँ. to join us for a call sometime. Oh. Yeah, we should do that. We should genuinely do that. It'll be good fun. If we can somehow pull it off to have a conversation with him for 30 minutes or something. Oh, okay. तो ये जो आज ही DD पे रामायण एंड महाभारत स्टार्ट हुआ है, ये उसी ने करा है. सुदर्शन न्यूज़ का जो हेड है. Ah, damn nice. क्या man. सही पे? हाँ, उसने ट्वीट किया था at the दूरदर्शन can be give a repeat telecast of the ये shows के नाम लिख दिए उसने, और कि जितनी भी सारी चैरिटी होगी, जितने भी अर्निंग्स होंगे, वो हम तुम्हें दे देंगे. तो दूरदर्शन का तुम भाड़ में जो हम खुद अपने पे दिखा देंगे. तो वैसे बस स्कूल बनने क्रेडिट लेने आ गए कि हाँ मेरी वजह से हुआ है, मैंने कहा था तो हुआ है. उसे क्या लगता है, नॉडी देखना उसको. हाँ, क्या? मैं आज देख रहा था and I don't know where I'm going with that anyway. तो आज एक डिबेट चल रहा था, बट डिबेट नहीं चलता, बस किसी को बुलाया था उन्होंने. तो कोई बीजेपी का कोई था, कोई आगे I don't know, नेता था या whatever. तो उससे क्वेश्चन पूछने की जगह, सो यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पे क्वेश्चन मार रहे थे. तो they were assaulting him with questions and वो बंदा बस यही बोल रहा है कि 1 सेकंड मुझे क्यों बुलाया तुमने यहाँ पे. Which channel is this? हाँ, one of the good ones, one of the इंडिया न्यूज़. हाँ ये see if CNN and what NDTV are like Downtown Abbey, तो this is उसका सुदर्शन न्यूज़, उसका टाइगर किंग देख रहा था. ये नाम क्या है? मुझे जानना पड़ेगा. तुम लोग न्यूज़ कहाँ से देखते हो? I must find out. मैं देखो वीडियोस भेज दूंगा सारी. हाँ, please. There was an earthquake as well. मुझे किसी ने बताया नहीं. There were 2. So I slept through the second one, but I had the first one. I felt the first one. First one. सेकंड वन मतलब दूसरा There were 2 earthquakes recently. क्या? वही exactly. मेरे दो को हुए. मेरे को मेरे को एक भी फील नहीं हुआ. वही So I felt the मैं first बस one pretty न्यूज़ well. खोली. Second That's one I what she couldn't. said. I probably slept through the second one. सेकंड वन That's कब what था? she said. She slept through the second one. Okay. Yeah, Second one या तो clearly- आफ्टर शॉक वगैरह कुछ The होगा. isolation is getting to you. Do you want some buttermilk Vaibhav? बटर में एनीवे मुझे बस न्यूज़ से मालूम पड़ा कि देयर इज एन अर्थक्वेक एंड देन न्यूज़ पे जो एंकर थी वो कुछ रिपोर्ट नहीं करी थी, वो बस अपने फ़ोन पे देख रही थी. एंड देन 15 सेकंड तक यही चलता रहा बिफोर समवन जस्ट केम
No, not Game? game, but You My God. news channel Someone- पे game. You. someone intervened. कि- I mean, I'll have my to mother curse is again, probably but- still listening to this, just to be clear. Amma, if you somehow made it till this part, please stop listening. I mean, I think it's become abundantly clear. You'll have to censor this. ऐसे कहीं नहीं जा रहा है. Story continue कर please. Someone came और फिर क्या? फिर क्या साफ किया अपने अपने घर से लगे सब. Yeah, क्या हो रहा है? नहीं नहीं so the actual story is कि बंदी अपने फोन पे थी and then हंस रही थी and कोई बीच में आके उसका फोन ऐसे उसके हाथ से छीन के ले गया. देर फिर उसे रियलाइज किया उसके सामने कैमरा है. देर फिर वो हंसने लगी. हाँ हाँ आज तो मैं ट्विटर देख रही थी. ट्विटर पे लोग बड़े मस्त है. तो न्यूज़ फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो चुका है इस पॉइंट पे. Yeah, man, the news is weird, but sure. We have to follow it. We don't have a choice. We do, I guess. I mean, we need to know what's going on, especially. Are you going to tune in? Are you going to sleep through it, or are you going to listen to the what? मन की बात. Address? Prime Minister's speech at 10 a.m. tomorrow. मन की, how dare you? It's not Man Ki Baat, no. I think there's a TV thing because we'll find out. I'm pretty sure this is basically there to tell us that. Whether the Extended. lockdown is being extended or not. हाँ. और नहीं नहीं हुआ तो extended हो कुछ चुका अलग है. है. It's been confirmed. हाँ. Delhi में extend हो गया? हाँ हाँ 30th April तक हो चुका है extended. Oh, cool. That's good then. Yeah, that's really good. Again, before people point it out, yes, I realize I'm extremely privileged when I can so casually say that it's good. All that. I know. You don't need to point it out. I know. That's what he said. That. He knows? Never mind. You don't have to point it out. I know. Left the house during the lockdown. नहीं मेरे को exactly पूरा 1 month हो चुका है. हम 14th को आए थे ना. Bruh. 14th March I guess. मैं तब से I think so, yeah. Daily fun puzzle number क्या है? Daily fun. I think it's puzzle 9. I think it's 9. Number 29. हाँ. 29. That's how I'm keeping track. Daily fun puzzle से पता चलता है मुझे कि कितने दिन हो चुके हैं. Yeah, so I left the house to go buy some groceries. So privileged. And dude, it was so. It was Yeah. so. I thought So? he established that. It was so. It was so. Full stop. It was so. So it was so quiet and empty. I filmed a video. If I can find it, I'll put it up on the screen. But it genuinely felt like I was Will Smith from I Am Legend. It was really sunsan. Except that you didn't have a dog. Or I have cats, which will probably, one of them will probably eat me the minute I die. they'll eat you out. Dude. Arey, हाँ. So I can't this remember. क्या? monstrosity called Bakasur. So I was sleeping. Okay, no, I wasn't sleeping. I was about to sleep. I was talking to someone, and so my room's on the first floor. And out of the blue, I just randomly hear a cat meowing outside my balcony door. I open the balcony door, and there she is. She's just there outside my room on the Acha, first so floor we're at talking about 2:30 your AM cat. or something, Acha, saying ठीक she है, wants ठीक food. है. Yeah, I'm talking about my cat. Yeah. जो पहले दो Dude, सेंटेंस से कहीं lockdown और जा है. रहा था. No, this monstrosity named Bakasur, then followed up by. Yeah, so my I was cat. sleeping. my cat's called Bakasur. I thought you knew this, but sure. I know. He just randomly showed up, man, in the middle of the night, saying "Khana do." I so wish I had like a pet right now, because it was कुछ करने को नहीं है. I mean है, but still करने कुछ का करने मन को नहीं नहीं कर रहा. हाँ.
यार इतना सेल्फ सेंसरशिप हो रहा है ना अभी मैं कैट से लेके मुझे मुझे समझ आ रहा है कि पिछली जो हमारा 0th पॉडकास्ट था उसमें अक्षित इतना क्वाइट क्यों था because he can't say half the things that go on in his head. If he says them out loud in a public setting, he'll be in jail. jail is just a room. No, I'm not saying the second part to that. I'm not. I know where this is going. I am not saying that. Arey, so again, this is a thing that happened. So in the previous podcast, we were talking a lot about Javed Jaffrey and how awesome Javed Jaffrey is. So every time there's a movie on TV or something and my mom spots Javed Jaffrey, and if I'm at home, she'll make it a point to come and tell me that Javed Jaffrey is on TV, come watch. So I've started watching Javed Jaffrey on TV now. Nice. What was the last horror movie you watched? We watched or I watched? We? No, you. As in, individually. I think what we watched together was The Past, and what I watched, I think it was The Past. I don't remember if I've seen any horror movie. Yeah, I've been planning to watch a couple of horror movies, but I haven't seen them. So the last horror movie I watched was The Past, which was Okay. quite a thing. I still need to make notes on it. Akshat? हाँ Hello? मैंने एक्चुअली होली वाले टाइम से डॉक्टर स्लीप डाउनलोड करके रखी है 4K में कि कभी टीवी पर देखूंगा Piracy! Thief! हाँ तो 4K में नहीं मिल रही कहीं भी डॉक्टर स्लीप ठीक है तो बट नहीं मिलता टाइम बिकॉज ओपनिंग सीन काफी अब मुझे देखना पड़ेगा. Absolutely no idea. मैंने हाँ, नहीं okay. देखा है वही. हाँ कोई नहीं Even I haven't seen it. वही. बट वही है मैं अब किसी दिन करना पड़ेगा मैं रिस्क ही नहीं लेता आजकल कुछ भी मेन टीवी पे देखने का. I think I talked about this before. Narcos, कि Narcos, Narcos के साथ क्या? हाँ, yes. So again, so I'm attempting to trying to get into shape. Trying is an overstatement, just to be very clear. And I've started to make an attempt to try running, if that makes sense. रनिंग कहाँ घर के अंदर क्या? रनिंग कहाँ पे So my garden is just about big Oh, enough. हाँ Okay, वही for- हाँ, अनप्रिविलेज्ड cool. बच्चों को Me too. समझ में नहीं आता. हाँ Hey, if you have a house and you're privileged enough to have even a tiny garden, it's good enough to do all sorts of exercise. I am ridiculously privileged. I'm not going to deny that. So I make an attempt to try to start running. So because I've had injuries in my knees and I haven't taken care of them well, so every time I think I'm getting better, I play sports and my injuries flare up again. So I bought a subscription plan and I said that there's no ego involved. The subscription plan says you run for a minute and walk for 5 minutes. You'll do it. There's no ego there. You just walk for 5 minutes, run for 1 minute and whatever. So I was running very slowly, very carefully. And then on my, what's that called? Playlist, BFG Division from Doom turns up. And obviously you can't feel normal when you're listening to BFG Division. You feel like you can punch something to death. So I started running really fast in tempo with the song. And what happens? My injuries flare back up again. Nice. Extremely. Very. Ouch. That hurt, man. ओके हाँ तो मेरा लकी नंबर इज 72 आई डोंट नो अबाउट यू गाइस I don't get it. थैंक्स I think वैभव तेरा क्या है तेरा क्या लकी नंबर Is that a reference I'm supposed to understand? नहीं What is going on? Oh, it's 72. अच्छा, तेरा क्या है lucky number? thing. I don't have a lucky number. ओके
वैभव I think it's pretty evident that it's 4 a.m. right now. अच्छा स्पीकिंग ऑफ विच आज 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 ऑलमोस्ट मैं मर गया है क्या? था Nice. सो have either of you guys So Akshat, ever what had did you a have for lunch? nosebleed? lunch I was saying something. Hold on. I almost died. क्या देखो खाने की पड़ी है. ये पाव भाजी था पता है मेरे को याद नहीं मैं सोचा था पहले डोसा खा लूं तो नहीं पाव भाजी खा लेते हैं Dosa, it's Bruh. not dosa, it's Bruh. dosa. We had this डोसा conversation before. मसाले वाला हाँ, डोसा हाँ, होता है या yeah, डोसा? yeah, yeah. तू मर रहा था. कुछ नहीं मेरे डोसे में मसाला नहीं था तो मैं. नहीं, Continue, so, you were dying. Please tell us. I don't know क्या हुआ. So I asked कि have either of you guys ever had a nosebleed? Yeah, 2 days ago actually. हाँ एक्चुअली राइट No. एक सेकंड ये क्या हर महीने होता है क्या? नहीं That time of the month, time for nosebleed. So I've never had a nosebleed before. And Okay. आज पता नहीं क्या हुआ मैं बालकनी में खड़े होके बस देख रहा था दूर बस कुछ और करने को नहीं है सो ऑल ऑफ अ सडन मैं लेफ्ट में देखता हूँ आई मीन कुछ था नहीं लेफ्ट में बट आई फील मेरी नाक बह रही है एंड आई एम लाइक व्हाट द फक एम आई 12 और समथिंग मेरी नाक क्यों बह रही है अभी इट्स 30 like 38 डिग्रीज मैं गर्मी से मर रहा हूँ मेरी नाक क्यों बह रही है हाँ It's called catching a हाँ, cold. while it's 38 degrees outside, हाँ. Yeah, you do catch a cold in the summer. Catching a cold. Anyway, मुझे लगा कि हाँ ठीक है मेरी नाक क्यों बह रही है something wrong. मैं अंदर गया to get a tissue and then by the time I realized कुछ like something's off, मैं इतना light headed हो गया कि मैं चल नहीं पाया. So I was like okay time to sit. फिर मेरी मॉम आई एंड शी इज लाइक ब्रा तो 2 मिनट तक लाइक टोटल पैनिक था मेरे दिमाग में कि क्या हो गया कि मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था मेरा क्यों No comment. मेरे पीरियड्स इतने लेट क्यों आए और मेरी नाक से क्यों आ रहे हाँ, you were saying. कटने से याद आया did anyone watch the news recently बंदे का हाथ कट गया हाँ कट गया या काट दिया मेरा काट दिया अपने आप थोड़ी कट एक दिन बस हाथ कट गया What happened? उसका हाथ काट दिया एंड देन वो अपना ही हाथ किसने? उठा के Did he beat the people with his own hand? नहीं इतना एपिक नहीं था तो उसने अपना हाथ उठाया फिर वो स्कूटी पे बैठा एंड देन फिर वो हॉस्पिटल चला गया विद हिज Shit. ओन हैंड इन हिज हैंड तूने वीडियो देखी वो Fact. हाँ बंदे ने हॉर्न कैसे बजाया होगा उसने ब्रेक कैसे लगी स्कूटी पे एक हाथ से एक्सेलरेट किया उसने This shit, huh? One is on the scooter, one hand is a clutch and one hand is a accelerator. No. बट अगर उसका No, one इंडिकेटर hand is a खराब clutch and one hand is the brake. If I बट अगर remember. उसका इंडिकेटर खराब हो जाता तो वो लेफ्ट टर्न का कैसे सिग्नल करता अबे उसके पास हाथ नहीं है, वो इंडिकेटर नहीं देगा. अरे तो एग्जैक्टली कैसे देगा कैसे देखा That's not high on his priorities right now. एक मिनट टर्निंग उसकी प्रायोरिटी नहीं है इंडिकेट करके टर्न करना उसका प्रायोरिटी नहीं है. इंडिकेटर टर्न करे उसका एक्सीडेंट हो जाए उसका दूसरा हाथ भी चले जाएगा दूसरा
फिर स्कूटी कैसे चलाएगा? टॉपिक क्या था, बात क्या हो रही थी? टॉपिक टॉपिक कुछ नहीं था आई गेस, बट अब टॉपिक ये है कि अगर बंदे के दोनों हाथ चले जाएंगे तो स्कूटी कैसे स्कूटर चलाएगा? कैसे? डीप। मेरी बिल्डिंग में एसी चला नहीं रहे थे ये लोग, बिकॉज किसी ने बोल दिया कि एसी चलाओगे तो कोरोना हो जाएगा। तो कौन नहीं चला रहा था? पिछले सेंट्रल एसी है, तो अगर एसी ऑन होगा तो हर किसी का होगा, वरना नहीं होगा। तो कम्युनिस्ट एसी है एकदम, तो एसी चला ही नहीं रहे थे बिल्डिंग वो है लोग। बे कि पूरे बिल्डिंग में सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग है। ईएटी टाइप दिल्ली में कोई, हाँ दिल्ली में कोई जिंदा नहीं रह सकता बिना सेंट्रल एसी के। तो एसी पूरे टाइम ऑन रहता है। एंड आई सेड आई वाज प्रिविलेज्ड। हाँ तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए, बट प्रिविलेज नहीं है बिकॉज उन्होंने एसी बंद कर दिया। नाउ द थिंग इज कि यहाँ Did पे you सारे, just say privilege, centralized air conditioning privilege नहीं है? क्योंकि बंद कर दिया, वो चला नहीं रहे थे। तो है ना, लेकिन पिछले- एग्जिस्ट करता है। हाँ पिछले 15 दिन से वो लोग एसी नहीं चला रहे थे, क्योंकि किसी ने कह दिया था कि एसी चलाओगे तो कोरोना You हो जाएगा। have the option for cribbing about the fact that AC नहीं चला रहे. That is privilege. क्या नहीं, एसी नहीं चला रहे मतलब एसी नहीं चला रहे। तो बात तो बोल लेते, ठीक है नहीं है प्रिविलेज, ठीक है लगवा देंगे तेरे घर पे। हाँ तूने लंच में क्या खाया था? Oh shit.